గవర్నర్ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదన్నారు బీజేపీ ఎంపీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. వెంటనే పళనిస్వామిని ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవకాశం ఇవ్వాలన్నారు. బల నిరూపణకు వస్తే క్లారిటీ వస్తుందన్నారు స్వామి. She is not going to be chief minister for some time, but the fact is that she is still the party leader, and she has demonstrated that the MLAs, despite all the attacks on weakening the hold of Shashikala and getting the MLAs to defect to Paneerselvam, all that has failed. Paneerselvam even yesterday could not produce a single MLA on the list, and it's only the governor who is not performing his duty according to the constitution. I don't know on whose advice, but it is bad advice, and he should now put an end to this partisanship and invite Palaniswamy to form the government and face the floor test of confidence motion. नहीं, ये ऐसे नहीं कह सकते. उनकी सजा 4 साल है, उसके बाद 6 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, और 10 साल के बाद भी आ सकती है. कई लोग 20 साल के बाद भी आते हैं. उसका उम्र ऐसा नहीं है कि वो 10 साल में यानी राजनीति छोड़ने की स्थिति में हो जाएगी. तो ऐसा मैं तो नहीं कह सकता. वो उन्होंने तो इतना तो सिद्ध कर दिया है कि उनकी पार्टी की जो नियंत्रण है वो कामयाब है, वो अभी भी है, और सारी प्रयास अनेक शक्तियों का इसको पनीरसेल्वम को कठपुतली बना करके इस अन्ना नियम की तोड़ने के लिए प्रयास सारा फेल हो गया है. और पळनिस्वामी 124-25 MLAs की लिस्ट के साथ उन्होंने दावा किया है. उसको मुख्यमंत्री आज तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जो राज्यपाल हैं वो किसकी सलाह पर ये इस प्रकार से पक्षपात कर रहे हैं मैं नहीं जानता, परंतु उसको बंद करना चाहिए, और नहीं तो इतिहास में उसका नाम खराब होगा. और वो तुरंत जिसके पास बहुमत है, और पनीरसेल्वम ने तो आज तक एक MLA का भी नाम नहीं दे पाए, और ये शपथ देकर फिर विश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए विधानसभा के सत्र में कहना चाहिए.